सो लास्ट लेक्चर में हमने सॉइंग देखे थे इन गार्डन ऑपरेशन। सोइंग में हमने उसका डेप्थ ऑफ सोइंग देन टाइप्स देखे। ओके, सो नाउ आई स्टार्ट मल्चिंग। So mulching, what is mulching? Mulching, it is a simple protective layer of a material that is spread on the top of the soil. Mulches can either be a organic भी है और inorganic. Okay, mulch organic भी होता है और inorganic. It is a simple a protective layer of material. क्या है? What is mulching? Simple protective layer of material that is that is spread on a top of the soil. Means mulches can either be organic. Organic means such as the grass, clipping, straw, bark chips, and a similar material. Or inorganic such as stone, brick, chip, and a plastic. Okay. तो मैंने सिलेबस में भी एक्सप्लेन की थी व्हाट इज मल्चिंग, है ना। It is a type of garden operation. In this process, layer of mulch applied to a soil surface around the base of plant. There are several kind of mulch as the leaves, corn, cotton seeds, aluminium foil. Okay, means it is a type of garden operation. गार्डन ऑपरेशन की टाइप है। देन इन दिस प्रोसेस लेयर ऑफ मल्च, क्या प्रोसेस क्या होता है इसमें? लेयर मल्च अप फेस कहाँ पे अप्लाई करते हैं? सॉइल सरफेस पे बेस ऑफ प्लांट, प्लांट के बेस के अराउंड में उसको अप्लाइड किया जाता है। ओके, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ देर आर सेवरल काइंड ऑफ मल्च एज अ लीव्स है, देन कॉटन, कॉर्न, कॉटन सीड्स, एल्यूमिनियम फॉइल। ओके, a mulch is a layer of material applied to the surface of soil. Then what is the reason for apply mulch? What is the reason? It include conservation of soil moisture. रीजन क्या है क्यों अप्लाई करते हैं हम मल्च? सो include conservation of soil moisture, then improving soil fertility, है ना। मल्च क्या करता है? improve करता है soil fertility. So include conservation of soil moisture, improving soil fertility and health of the soil. सॉइल फर्टिलिटी भी इम्प्रूव कर रहा है, देन हेल्थ ऑफ सॉइल भी इम्प्रूव होती है, रिड्यूस वीड ग्रोइंग एंड enhancing the visual appeal of the area. These are the benefits of mulching also. Okay, so what is the reason for apply mulch? The reason क्या है? Include conservation of soil moisture, improving soil fertility and health of the soil, then reduce weed growth and enhancing the visual appeal of the area. Okay, समझ में आया सबको व्हाट इज मल्चिंग? हेलो, रिस्पॉन्स तो करो। हाँ व्हाट मैम इज समझा। मल्च? ओके, सो process of covering the open surface of the ground by a layer of some external material. Mulching is the process of covering the, simple आंसर क्या होगा? Process of covering the open surface of the ground by a layer of external material is called mulching. Okay, and the material used for covering is called as a mulch. Mulch means material used for covering is called as a mulch, and mulching is a process. Difference क्या है? Material used for a covering is called mulch, and the process of covering the open surface of a ground by a layer of some external material is called as a mulching. Okay,
ओके, आई एम एक्सप्लेन बेनिफिट्स, है ना। मैंने तुमको अभी यहाँ पे बेनिफिट्स एक्सप्लेन की, उसके इम्पोर्टेंस क्या है मल्चिंग के। टेल मी व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ मल्चिंग। एडवांटेज क्या है यहाँ पे? इंक्लूड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर, देन इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी एंड हेल्थ ऑफ द सॉइल, then reduce weed growth and enhancing the visual appeal of the area. Then what is the disadvantage of mulching? Tell me any one disadvantage. Yes, चैट पे नहीं बोलना है। अगर मल्चिंग के मतलब लेयरिंग या प्रोसेस जो ज़्यादा होंगी तो वो प्लांट को एक्टिव हीट प्रोवाइड करेंगी। Okay, so disadvantage is over mulching can bury and suffocate plant. Okay, and mulch provide a convenient hiding place for a pest. Bake your plant with excess heat if done incorrectly. So these are the disadvantage of mulching. So अभी notes में देखेंगे. First point is in mulching, first point, it is one of the important garden operations. It consists of a layer of mulch applied to soil surface around a base of planting. Is a mulching consists of a layer of mulch applied to a soil surface around the base of the planting. Then kind of mulch, जैसे मैंने यहाँ पे explain की पहले भी, kind of mulch, there are several kind of mulch as a straw, leaves, corn, cotton seed, husk, plastic sheet, aluminium foil, मीन्स ऑर्गेनिक भी है और इनऑर्गेनिक मल्च, दोनों टाइप के मल्च होते हैं जो यूज्ड होते हैं। ओके, ऑर्गेनिक है तो स्ट्रॉ आएंगे, लीव्स है, देन कॉर्न्स, कॉटन सीड्स, ये टाइप्स किसके? ऑर्गेनिक के मटेरियल यूज होगा ये। एंड इनऑर्गेनिक में हस्क, सॉरी, प्लास्टिक शीट एंड एल्यूमिनियम फॉइल। Then purpose of mulch. What is the purpose of mulch? To regulate soil temperature. क्या करता है वो? रेगुलेट सॉइल टेम्परेचर, कंजर्व मॉइस्चर, मॉइस्चर कंजर्व करता है, देन कंट्रोलिंग वीड्स। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ मल्च. ओके, then prevent soil erosion by splashing raindrops, then prevent destruction of fruit plant product. A mulch prevent breaking of soil top exposed to sun and air. Then breaking of soil is harmful because it prevent evaporation of water. So these are the purpose of mulch. Then time of mulching. Time of mulching, वहाँ पे पॉइंट है नहीं टाइम ऑफ मल्च का, है ना, टाइम ऑफ मल्चिंग का। आई विल सेंड यू. मोस्ट गार्डनर वुड से ड्यूरिंग द फॉल ऑफ विंटर एंड देन अर्ली स्प्रिंग. कौन सा टाइम होगा? टाइम ऑफ मल्चिंग इज मोस्टली गार्डनर वुड से ड्यूरिंग द फॉल ऑफ विंटर एंड देन अर्ली स्प्रिंग. मिड टू लेट स्प्रिंग इज अ मल्चिंग सीजन. कौन सा सीजन है? मिड टू late spring is a mulching season, that when the soil warming up from the freezing temperature. Okay, doing mulching too early will slow down the warming process. So this is a mulching, time of mulching.
I'm showing you a video. Watch this.
अभी आ रही है आवाज? हेलो। Okay, so top dressing soil means top dressing is the process of spreading a thin layer of material, usually a compost or a sand. Okay, what is top dressing? Top dressing is the process of spreading a thin layer of material, usually a compost or a sand, over a lawn or a section of lawn. Okay, so top dressing is a good idea. It is a good way to incorporate a new seed into an existing lawn is to first core aerate the lawn. Means core aeration is a type of lawn aeration whereby a machine means वहाँ पे lawn aerator is used. वहाँ पे लॉन एरेटर यूज होता है. टॉप ड्रेसिंग इज अ गुड आइडिया. So this will help to relieve any compaction issues, and it will also provide a good size for the seed to germinate. Okay, help it will help. This will help to relieve any compaction issue, and it will also provide a good site for the seed to germinate. Then, what soil is best for the top dressing lawns? Tell me, what soil is best for the top dressing lawn? I will show you video है ना. Recently आप लोगों ने अभी वीडियो देखे टॉप ड्रेसिंग की. Now tell me what soil is best for the top dressing lawn. Don't tell me on a chat. Sand, peat, loam. Okay, correct. So it is the best to use compost or a sandy type loam to spread on a lawn. Okay, best to use compost or a sandy type loam to spread on a land before you actually spread the dressing. Make sure the grass may damage it. Should fertilize the lawn a couple of weeks before a top dressing. This will help the grass push through the soil quickly. Okay, then what is the benefits of top dressing? बट फर्स्टली हम देखेंगे नोट्स में व्हाट इज टॉप ड्रेसिंग. सो इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट गार्डन ऑपरेशन. ओके, जिस मल्चिंग एक गार्डन ऑपरेशन है, वैसे ही टॉप ड्रेसिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट गार्डन ऑपरेशन. देन इट इज कॉमन प्रैक्टिस टू एनरिच सॉइल फ्रॉम टाइम टू टाइम सिंस इनिशियल अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर इज नॉट सफिशिएंट फॉर अ रैपिडली ग्रोइंग प्लांट्स. है ना. A common practice to enrich soil from time to time since initial amount of fertilizer is not sufficient. Only fertilizer sufficient नहीं होता for a rapid growing of plant. Besides that, mostly soil fertilizer leaches out from a bed as well as throughout a watering. Thus, addition of fertilizer is very essential to keep soil fertile. Okay, keep soil fertile. Supplement does of fertilizer to plant at various stages of growth of seedling to fruit setting is known as top dressing. Supplement does of fertilizers to plant at a various stages of growth of seedling to fruit setting is known as a top dressing. Bird begin when birds begin to appear in a perennial such as a chrysanthemum, rose, the surface should be exposed. है ना. When birds begin to appear in a perennial such as a chrysanthemum and rose, the surface should be exposed, and manure with fresh dust of cow dung is added for a large fruits. For a seasonal at the time of flowering,
Nitrogen, phosphorus, potassium should be applied over a surface of soil by carefully incorporating it with a sharp instrument without disturbing roots. फर्टिलाइजर्स में हमने देखे थे जैसे मैनवर एंड फर्टिलाइजर में ऐड करते नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम एज ए फर्टिलाइजर यूज होता है. सो फॉर अ सीजनल एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग NPK should be applied over a surface of soil. सॉइल के अप्लाइड किया जाता है ये एज ए फर्टिलाइजर बाय केयरफुली incorporating it with a sharp instrument without disturbing roots, followed by a sufficient watering. Okay, then next point is the benefits of top dressing. वहाँ पे नोट्स में जब तुम लोग लिखेंगे तो वहाँ पे ऐड करना है बेनिफिट्स ऑफ टॉप ड्रेसिंग. ये मैंने तुमको नोट सेंड की हूँ अभी व्हाट्सएप पे. ओके, सो benefit of top dressing is there are 4 benefits. Improve soil, then breaking down thatch, then level lawn, help seed germination. Improve soil means top dressing added nutrient to your lawn organically and improve drainage. टॉप ड्रेसिंग एडेड न्यूट्रिएंट टू योर लॉन ऑर्गेनिकली भी करता है और क्या कर रहा है वो इम्प्रूव ड्रेनेज इज अ टॉप ड्रेसिंग बेनिफिट ऑफ टॉप ड्रेसिंग. नेक्स्ट इज अ break down thatch. The top dressing material help to break down the thatch layer in lawn. Then level lawn. If you have an area of your lawn that are bumpy, top dressing is a great way to smooth out this area. Smooth out करता है ना. So if you have an area of your lawn that are bumpy, top dressing is a great way to smooth out this area. Then help seed germination. If overseeding your lawn, top dressing allowed to make direct contact with soil, which is best for a germination. Okay, so these are the benefits of top dressing. So समझ में आया सबको what is mulching, what is top dressing? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ब्रांचिंग स्टार्ट करेंगे. ओके, we should stop here. Thank you.